Assalamu alaikum, my dear students. Today topic is matter and classification of matter. What is matter? Matter is a thing that has mass and volume or which occupies space is called matter. So हर वो चीज़ जो space cover करती है matter है. All liquids, solids, gases are matter. So everything around us, for example, chalks, chairs, book, water, table, salt, everything, these are matters. Now we will describe different classification of matter. Matter is classified into following types: pure substances and mixture. Pure substances जो है वो further उसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक है element और compound. ये सब हम मैटर की क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं. तो मैटर की फर्स्ट जो क्लास है वो प्योर सब्सटेंसेस है, उसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आते हैं. दूसरी जो क्लास है वो मिक्सचर है. देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर्स, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now we will discuss first class of matter, which is pure substance. Pure substance is a type of a matter having a definite chemical composition and same properties everywhere. It's called a pure substance or simple substance. Means every part of the world उस substance की जो properties हैं वो same रहेंगी. For example इसमें element है for example hydrogen. तो hydrogen जो है वो every part of the world same रहेगा. जो पाकिस्तान में है या अमेरिका में है, ये नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं तो फिर किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी. वो एवरीवेयर सेम रहेगा. तो ये प्योर सब्सटेंस इसकी मेन करेक्टरिस्टिक है, जो मैटर का फर्स्ट क्लास है. अब जो प्योर सब्सटेंस है ये फर्दर क्लासीफाई होती हैं दो चीज़ों में. So substances is further divided into two types, element and compound. What is element? An element is a type of a pure simple substance that cannot be broken down into simpler substance by chemical or physical method. It is a pure substance consisting of only one kind of atom. It is called element. Fundamental unit of an element is called atom. An atom is the smallest particle of an element that can take part in chemical reactions. Thus, it can be said that atoms are the building block of an element. The atomic number of all the atoms of an element are exactly same. For example, helium is an element. It consisting of helium atoms only, in which the atomic number of all the helium atom is 2. अब हीलियम जो एलिमेंट है वो सिर्फ हीलियम के एटम से मिलकर बना है. ये ऐसा नहीं है कि हीलियम के एटम में हाइड्रोजन के एटम भी इन्वॉल्व हैं, सोडियम के भी हैं या किसी और एलिमेंट के. नो, देयर आर टोटल अबाउट 118 elements have been discovered till now. Elements are classified into natural and artificial. Elements are present in solid, liquid and gaseous state. अब दो तरह की क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, एक तो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं और एक है आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में मेड होती हैं. The number of the natural element is 92. There are totally 92 elements which are naturally occurring. And the element after uranium, atomic number 92, have been prepared synthetically in the laboratory. They are called trans-uranium series element. So means जो artificially हम बनाते हैं यूरेनियम atomic number 92 के बाद लेबोरेटरी में, उनको हम ट्रांस यूरेनियम सीरीज ऑफ एलिमेंट कहते हैं. Element is always represented by a symbol, which is a short abbreviated name of that element. It may consist of 1, 2 or 3 letters. From table, I will describe some names of elements along with their symbols. So in this table, there are some names of elements along with their symbols. For example, hydrogen has a symbol of H, nitrogen N, oxygen O, carbon C, boron B. There are some elements which symbols are derived from their Latin words. For example, iron Latin word Latin name is ferrum. That's why its symbol is Fe. Sodium Latin name is natrium. That's why its symbol is Na. Potassium का जो Latin name है वो कैलियम है. That's why its symbol is K. Copper का Latin words cuprum है. That's why its symbol is Cu. Lead का Latin name plumbum है. That's why its symbol is Pb.
History of symbol is that in 1814 Berzelius formed a system of symbols. The symbol of element consists of 1, 2 or 3 letters. The first letter is written always in capital, while the second or the third are written in small letters. For example, H for hydrogen and HE for helium. H capital and E small. Na for sodium. Sodium Latin name natrium है. Na है first, that's why जो उसका first letter है वो capital है N and second letter A is in a small letter. So it was all about element. Now जो pure substance की second class है वो है compound. You know that we are learning about the matter classification. तो मैटर की क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट क्लास थी प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट पढ़ा है, अब उसके बाद कंपाउंड पढ़ेंगे. सो व्हाट इज कंपाउंड? द प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट in a definite portion by mass is called compound. A compound has the following properties. A compound has a different properties from the parent element which are making that compound. So it is clear from the example given below. For example, water is a compound made up from hydrogen and oxygen. Water has quite different properties from hydrogen and oxygen, such as water extinguishes fire. Hydrogen burns by itself while oxygen helps in burning. वही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब मिलकर वाटर बनाते हैं तो वाटर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बनिस्बत उन एलिमेंट्स से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो रिएक्शन से पहले उनकी प्रॉपर्टी थी. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में कि ये आग लगाने में हेल्प करते हैं, लेकिन जब दोनों ने रिएक्शन किया और कंपाउंड बनाया वाटर, तो वाटर आपको पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर है, पानी को आग को बुझाता है. So the compound has a different properties from its parent elements. So the parent elements of a compound lose their properties when they chemically combine to form that compound, as clear from this example. Similarly, a compound can be broken down into simple substances by various chemical methods. This fact is clear from example. For example, sodium chloride, NaCl, is a compound made up of 39.3% sodium and 60.7% chlorine. Sodium chloride is a normal table common salt in our kitchens. इसमें जो सोडियम होता है वो 39.3% होता है, क्लोरीन 60.7% होता है. ये दोनों सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होके साल्ट नमक बनाते हैं. So sodium chloride can be broken down into sodium and chlorine by chemical process called electrolysis. जो नमक है सोडियम क्लोराइड, इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 different elements, सोडियम और क्लोरीन में, through electrolysis. The composition of a compound is represented by a chemical formula, which is a collection of symbols of which it is made. तो एलिमेंट की जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो सिंबल से करते हैं, और कंपाउंड की जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो केमिकल फार्मूला से करते हैं. उसमें तमाम एलिमेंट्स के सिंबल हम यूज करते हैं जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड मिलकर बना है. सम एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स जैसे ब्लीचिंग पाउडर विच इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इट इज आल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. Caustic soda, this is also compound. It is made up of sodium and hydroxide. Lime or quick lime, it is made up of a calcium and oxygen, and it's called calcium oxide. So you are seeing that these compounds are made up of more than one element. For example, in chili salt peter, which is called sodium nitrate, तो इसमें देखें कितने एलिमेंट्स है. सोडियम अलग है, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो डिफरेंट एटम्स से मिलकर एक कंपाउंड बनाया. Another example of a compound is a limestone, which is called calcium carbonate. So the compounds are always made up of more than one elements.